प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद जनाब, मौजूद हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में और यहाँ पर मेला सजा हुआ है ILT20 यानी इंटरनेशनल T20 लीग बाय एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड। हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंड, नीड नो इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वसीम भाई, आप लोगों ने भी सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है, बड़ी लीग्स हुई हैं और नाउ एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड हैज देयर ओन लीग, सो इनको तो मुबारकबाद जरूर देनी चाहिए। हमें बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। नहीं, बिल्कुल बहुत सपोर्ट की है और ये बड़ी नीड ऑफ द आवर थी एमिरेट्स क्रिकेट के लिए, बिकॉज क्रिकेट में बहुत शौक है यहाँ। इनकी टीम की थोड़ी ये प्रॉब्लम थी कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट और इस तरह की चीज़ें कम करते थे, जहाँ वो लाइक स्किल वाइज तो ठीक थे, बट जो मैंने नोट किया था फिटनेस में उनको प्रॉब्लम होती थी। बस दिस DP वर्ल्ड ILT20 इट्स एक्चुअली अ लीग अपार्ट, जो इनका एक हैशटैग है। लीग अपार्ट इसलिए है कि एक प्लेइंग 11 में 9 जो हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और 2 खिलाड़ी जो UAE से होंगे। और अभी तक थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ है टूर्नामेंट का, इन वे क्रिकेट वाइज थोड़ी टीमें कॉम्बिनेशन बना रही हैं, थोड़ा चेक कर रही हैं, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप लीग्स इन द वर्ल्ड इन फ्यूचर इंशाल्लाह। वसीम भाई, पाकिस्तानी प्लेयर इस बार तो नहीं है, लेकिन जब हमने कुछ पता किया तो कुछ वो कहते हैं ना, बुलबुल या चिड़िया पर कह रही है कि जी अगले साल कोई ना कोई हमारे प्लेयर जरूर होंगे। तो आई थिंक फिर ये जो हमारे जो पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं और फिर जो इसका एक PSL वाला माहौल, तो आई थिंक दिस लीग डेफिनेटली लीग पाकिस्तानी प्लेयर्स और इंडियन भी शायद अगर वो आना चाहें तो। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तानी प्लेयर्स जब तक नहीं होंगे वो लीग कामयाब इसलिए नहीं हो सकती एज फार एज क्राउड कंसर्न, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी नेशनलिटीज रहती हैं। पाकिस्तानी हमारी वन ऑफ द टॉप नेशनलिटीज हैं UAE में। जब तक पाकिस्तानी प्लेयर्स आते यहाँ आएंगे इंशाल्लाह अगले साल, और UAE ने बड़ी हेल्प की है पाकिस्तान की यार क्रिकेट में। 10-12 साल यहाँ ग्राउंड्स दिए, होटल्स दिए, सिक्योरिटी दी, और दे वेरी क्लोज टू पाकिस्तान बाय हार्ट एज वेल। सो आई थिंक अगले साल जब पाकिस्तान टीम आएगी, ये साल भी कामयाब होगी, बट अगले साल आई थिंक इट विल बी लॉट मोर फन एज वेल। सर जी, बड़ा वेट किया था हमने बम्पर सीजन का कि हमारे पास टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद डेफिनेटली हमारे पास इंग्लैंड भी आया। तशने की रहेगी कि हम जीत नहीं सके वसीम भाई, और आप लोग के दौर में तो ये टीमें आके मैच ड्रॉ कर लेती थी, बड़ी चीज होती थी। तो डिसअपॉइंटमेंट वेरी फेयर, मतलब राइटली सो फॉर फैंस, फॉर मीडिया, इवन आप जो एक्सपीरियंस हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं आया सर ये। मैं ट्रैवल कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया था, मैं अमेरिका था, बट ऑब्वियसली आप स्कोर कार्ड्स देखते रहते हो, फॉलो करते हो पाकिस्तान क्रिकेट को, और जब पाकिस्तान जीतता है तो पूरी नेशन को एक खुशी भी होती है। बट बिल्कुल हम हारे, ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, इंग्लैंड से भी 3-0 हारे, फिर न्यूजीलैंड से भी आई थिंक सीरीज हम ड्रॉ होगी, वनडे हार गए। बट यूसी टेस्ट क्रिकेट में जो मैंने नोट किया है, मेरे ख्याल में कि थोड़ा था फेयर ऑफ लूजिंग था, कि विकेटें ऐसी बनाओ कि या तो बिल्कुल टर्नर बना दो पहले दिन से ताकि 3 दिन में फैसला हो जाए, या उस पर थोड़ी घास रख दो। मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी घास रखो, मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी घास, पहले दिन बॉल हिले, दूसरे दिन बैटिंग हो, तीसरे दिन बैटिंग हो, चौथे दिन थोड़ा टर्न करे। ये बड़ी साइंटिफिक एक चीज है पिच बनाना। ठीक, वो डेड पिच तो मैं भी, कोई भी बना सकता है क्रिकेट लेवल, जाके घास उतार दो, रोल करते रहो, शाम को पानी दो, वो डेड पिच बन जाएगी। सो एक तो वो पिचेस ने काफी बोर किया लोगों को। अगर ये 3-3.5 दिन में हम हार जाते, टेस्ट क्रिकेट अच्छा मजेदार खेलते, तो शायद टेस्ट क्रिकेट रिवाइव हो जाती पाकिस्तान में। वसीम भाई, कोई कंफ्यूजन आपको दिखाई देती है कि हम, हालांकि ठीक है शाहीन इंजर्ड थे या नसीम इंजर्ड थे, लेकिन हम ना तो स्पिन विकेटें बना सके, ना हमने फास्ट बॉलर, और फिर हम शिकस्त से भी नहीं बच सके। तो मतलब हमने तो एक्चुअली कुछ भी अचीव नहीं किया। जब बचने जाते हो ना, आपके मैच शायद ड्रॉ हो जाए, आप हारे ना, तो मोस्टली आप जिंदगी में, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, लाइफ की बात कर रहे, जब सेफ खेलते हो आप यूजुअली हारते हो। ऑलवेज गो फॉर द विन, इन प्रोसेस इफ यू लूज इट्स ओके, इट्स ओनली अ गेम इन द एंड, एंड दैट्स वेयर वी, एंड इसीलिए मेरा ये भी है कि पाकिस्तान के कप्तान को हमने सपोर्ट करना है। दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ साइड पे कर, कप्तान चेंज कर दो, ये कर दो। 3-4 मैंने देखे हैं ट्विटर पे, उनका काम ही ये, वो ट्वीट ही करते रहते हैं हर 2 सेकंड बाद। और इसको सपोर्ट करो पूरा, ये पाकिस्तान के आगे जाके बड़ा अच्छा कप्तान बनेगा, उसका कॉन्फिडेंस शेक ना करो। और मैं कहता हूँ, इंग्लिश का मुहावरा है ना, वी डोंट नीड एनिमीज, हम आप ही बड़े हैं अपने लिए। इस पे लोगों को गुस्सा आएगा, बट आए, बिकॉज उनको पता, उनको बताने वाला भी होना चाहिए कि यार देयर इज अ टाइम इन अ प्लेस, दिस इज तरीका ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, पर्सनल ना हो, बदतमीजी ना करो, क्रिकेट का कोई अकल है उस पर बात कर लो, ठीक है। नेगेटिव क्रिकेट हुई टेस्ट क्रिकेट में, ये एक बंदे का डिसीजन नहीं था, ये सारी थिंक टैंक होता है आपका, ठीक है। सिलेक्शन प्लेइंग 11 भी एक बंदे का डिसीजन नहीं होता, आपकी थिंक टैंक होती है, आपके कोचेज होते हैं, आपका सीनियर प्लेयर होते हैं। हमारे दौर में होता था, आपका सिस्टम को मुझे पता नहीं अब क्या है पाकिस्तान टीम में, बट ऐसे ही करते थे हम। वसीम भाई, हमने की और देखी कि ट्रांजिशन भी है, क्योंकि चेयरमैन चेंज हुए, एक
चीफ सेलेक्टर चेंज हुए, फिर से हमने देखा शायद आए, अब हमने हेड कोच ढूंढना है। मिकी आर्थर रिपोर्टेडली वो अवेलेबल नहीं है, एंडी फ्लावर टॉमवुडी यहाँ पर है, उन्होंने कहा जी उनकी लीग, तो भाई बड़ा मुश्किल फैसला, और ये बड़ा अहम फैसला वसीम भाई होने वाला है, क्योंकि जो शायद हम बुनियाद रखेंगे। दूसरा, बाबर को भी सर सपोर्ट चाहिए ना, एक तगड़ा मेंटोर, जैसे आपके साथ एक जमाने में इमरान खान लेजेंड थे, आप लोग से फिर बाद में दूसरे नजाक कहते हैं, शायद आफरीदी कहते हैं कि हमने वसीम भाई से ये सारा कुछ सीखा। तो आई थिंक बाबर और दिस टीम नीड सम मेंटोर सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी। या आई थिंक सो। इस टीम को ऐसा कोच स्लैश क्रिकेट डायरेक्टर या क्रिकेट डायरेक्टर ऐसा चाहिए जो इनको ऑफ द फील्ड भी बता सके लड़कों को, ऑल्दो दे वेल ट्रैवल्ड बॉयज, नो डाउट अबाउट इट। यस, अब कोचिंग का अब ये मीडिया नहीं कहना कोच बदलना चाहिए। ऑब्वियसली जब आप परफॉर्मेंस नहीं होगी, जब आप हारोगे, तो कोच पे सबसे पहले ब्लेम आता है। हालांकि कोच का इतना कसूर नहीं होता, उसने सिर्फ प्लान देना होता है, खेलना तो लड़कों ने। अच्छा वसीम भाई, पर टेन्योर भी फिनिश हुआ और शायद रिपोर्टेडली वो खुद भी कैरी नहीं करना चाहते, ये भी एक एलिमेंट है। आई सपोज जितनी उनसे बदतमीजी की गई है अपने लोगों ने, तो वो मैं भी उनकी जगह होता, मैं भी कहता मैं आराम से आई वांट टू टेक अ ब्रेक अ बिट। आई डोंट ब्लेम देम ईदर। एवरीबॉडी वांट्स टू विन यार, कोई बाहर जाके आपको कोई नहीं चाहता कि वो हारे। कप्तान ले लो, कोच ले लो, बोर्ड ले लो, बोर्ड तो बदलते रहते हैं। 13 चेयरमैन में तो मैं खेला हूँ 17 साल में। दैट्स नॉर्मल इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें बिग डील क्या है? ठीक है वसीम भाई, मुझे ये पता चला कि चाहे ये बोर्ड है या जो भी आया ये पहले, दे वांट समवन, जो आप हैं कि भाई वसीम भाई को भी हम अप्रोच करें, कि फिर जो बहुत सारी और चीजें हैं, आपका इस पे टेक क्या है? मतलब लोग कहते हैं वसीम अकरम जो है ना शायद वो फास्ट बॉलर्स के लिए या कोचिंग या चीफ सिलेक्टर, आपका सर इस पे क्या, लोग चाहते हैं कि आप आए टीम के साथ? Chief selector is a very tough job. You need to take a time out. You need to be traveling all over Pakistan for first class games, watching first class, watching under 19, watching B, grade 2 cricket. उसका टाइम नहीं और एज नहीं मेरे पास। सो चीफ सेलेक्टर हमारा पाकिस्तान में कोई ना कोई नहीं मिल जाएगा। आई थॉट शाहिद अफरीदी डिड अ गुड जॉब, बट अगेन उसका था वो टेन्योर, आई सपोज खत्म हो गया। अब देखिए ये बोर्ड या नजम सेठी साहब क्या डिसाइड करते हैं। एटलीस्ट इस बोर्ड से ये होगा कि कम से कम अगर कोई सीईओ है तो वो अपना काम कर पाएगा, अगर कोई कोच है तो वो अपना काम करेगा, ग्राउंड्समैन है तो वो अपना काम करेगा। ऊपर से कोई बताने वाला एक बंदा नहीं है कि ये भी कर दो, ये भी मैं करूंगा, ये भी मैं करूंगा। सो थोड़ा बेहतर होगा। सर ये हमने एंड देखी कि शान मसूद को जब वाइस कैप्टन बनाया, फिर वो खेले नहीं, ऑब्वियसली ऐसे लगा जैसे कोई चीज करने की कोशिश की जाती है, फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई। ये तीन फॉर्मेट वाली वसीम पे डिबेट में एक चीज तो है कि वर्कलोड तो बहुत होता है, लेकिन जैसे आपने कहा बाबर को सपोर्ट करना है, लेकिन जो तीन के तीन जो फॉर्मेट है वसीम भाई, वर्ल्ड कप इस साल भी 2023 में, 24 में T20 का है, टेस्ट हमारे इतने ज्यादा अब नहीं हो रहे, हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं कि बाबर भी चलते रहे, उन पर वर्कलोड भी ना हो, परफॉर्मेंस शायद वसीम भी आप भी एग्री करेंगे इतनी बुरी नहीं है उनकी। बिल्कुल। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि बाबर से भी पूछ लें, कैन समबडी आस्क हिम कि व्हाट ही वांट्स टू डू। ये हम ही सारे क्या असरियां कर रहे हैं ना कि 3 होने चाहिए ना, कि ऑफिशियल तो कहीं से नहीं आया ये अभी तक। ऑफिशियल का स्टेटमेंट नहीं आई, जेपीसीबी की चेयरमैन की कोई कुछ नहीं आया। So for once, let's ask the captain himself what he wants to do. What are his plans? Because हमारे यहाँ मैं 8-7 कप्तानों के अंदर तो मैं खेलूँ, एक कप्तान बना है, उसको जरा चांस दे दो और थोड़ा सा उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दो, उसकी पर्सनल लाइफ का पीछा छोड़ दो। Let's support the guy. He's one of the best players in world cricket. He's a treat to watch. And let's hope कि सामने हमें कोई थोड़ी सी सैनिटी परवेज अकल आ जाए। तो और हम मौजूद हैं इस वक्त दुबई में, और यहाँ पर मेला सजा है। वैसे तो पूरी दुनिया की लीग यहाँ पर हुई है, लेकिन अब यहाँ पर जो एमिरेट्स T20 लीग, इंटरनेशनल T20 लीग, उसका मेला भी सजा हुआ है। और उसकी जो टीम है डेजर्ट वाइपर्स, उनके हेड कोच जेम्स फोस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू जेम्स फॉर योर टाइम, एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट many of the international league happened here, but now it's the first time that of course the Emirates launched their own T20 league, so it must be a very exciting time for the Emirates cricket and of course the team, and of course every time when you start the new league it's a very exciting time. Yeah, it's hugely excited, like you said. Brand new franchise, brand new tournament. The franchise has been working exceptionally hard behind the scenes. Been a good year in the making. And then as we started building our side back in July, everyone's been very excited, and now we're almost here. Like the first game, or the opening ceremony is today. Our first game's on the 15th. Everyone's chomping at the bit. We've had a really good training schedule already. Worked very hard. A few more players have been starting to come in from abroad. It's a quality setup, and it's a league which everyone's really excited about. Okay.
Tell us, this will honor in Pakistan media, so tell us something about your team, and of course, the team behind it, and of course, your aim for the tournament. Well, we've got Tom Moody as director of cricket, and there's myself as head coach. We've got Asma Mood, Islamabad head coach, who's our bowling coach. Got Carl Crowe as spin coach. Simon Helmets as our fielding coach, and we've got Neil McKenzie as our batting coach. So we've got a star-studded coaching lineup. Absolutely thrilled to have the quality of coaches under my disposal. And us, in our playing group, we've got world-class players from top to bottom. A lot of variation available. In our bowling attack, we've got some high pace, and like Tamal Mills, Gus Atkinson, who you guys may not be too aware of, but a very young, promising fast bowler in England. We've got Matisha for the baby Malinga from Sri Lanka. Tom Curran, we've got loads of experience, and then we've got Hasaranga coming. He's missing our first game, unfortunately. Once his series against India completes for Sri Lanka, then he'll be heading over to here and be available for our first game. We've got a lot of power of our batting. Skipper Colin Munro, Alex Hales, for example. Again, Pakistan public, be aware of those two batting together for Islamabad as well. So now it's a really exciting squad that we've assembled. Your head coach Peshawar Zalmi as well, have been known this for this, for you for this as well. So of course, must be very exciting, James. Now, especially in the days of the league cricket, that coaching the franchise team from one country to another to see some exciting talent. So this is, I think, a very different sort of coaching challenge, and of course, to assemble the team for 1 month, and of course, many of the coaches now doing 1 or 2 assignments in a year. So how tough, challenging sometimes it's, James, to manage all of this. Of course, everyone is professionally done, but it's very exciting and of course challenging as well, because you have to make the combination the right side sort of alignment, and of course, especially when you talk about, you also, as you mentioned, worked with the PSL as well now in the International T20 League, the new exciting talent. I think this is the, and of course, you guys who actually coached the young talent first in the franchise, then of course, many of them are going to play for international cricket. So now that is very interesting. Well, coaching franchise cricket is a lot of fun, that is for sure. Most tournaments are around about sort of 4 or 5 weeks long. And the challenge for the coaching staff is to make sure you bring your group of players together, try and make them gel as quick as you possibly can. But it's very important that you have a lot of fun. Is the style that I like to work on. I'm pretty relaxed. I like to run a relaxed ship, and I want the guys to feel comfortable and ultimately express themselves out in the middle. But if they feel an environment that they feel comfortable in, I believe it's going to give people the best chance to perform. Over here, obviously with the UAE, we've got UAE players. We've got 4 in our squad, playing 2. So that's a quality addition to this campaign and this ILT20, an opportunity to grow UAE cricket. You know, there's so much talent around these shores. I've seen a lot of it during T10 and a few other competitions over the years. And it's a real opportunity for UAE cricket to continue to grow. Absolutely, and of course, many of Pakistan players also played first in the PSL and especially in UE time, and they actually went on to play the international cricket. And last, because the Pakistani audience also watching you from my channel, and you worked with Peshawar Zalmi as well, and you've seen a lot of new talent, and now they are being some other places like Heather now in Karachi Kings, and of course, so what do you remember for your Zalmi stint, or of course the talent you've seen there? Well, funny you mentioned Heather Ali. I remember, must have been 3 or 4 years ago. Akram was head coach at the time. I've come over. Darren Sammy was captain. I remember we played one of the practice. We had a very early practice game at Mowing Khan's ground. Yes. And he came into bat, I think 3 or 4, and I think his first or second ball he hit it for 6. And we all kind of stood back and thought, wow. And he played an unbelievable innings, just so explosive. He's got so much ability and talent. And that's the beauty about these competitions. Obviously, being around in the PSL for quite a while, you get to see these young talent. People come out of nowhere. You don't really know too much about them. In particular, when you see Lahore, often got a great talent scouting program, and get to see these fresh, young, fast bowlers come out of nowhere. So the talent is there, in particular in the PSL, and the same over here. Same opportunities. We've got a young fast bowling all-rounder called Alin Sear, who's a very exciting talent. I mean, I'm intrigued to see how he goes on over his next sort of 10, 15-year career.
थैंक यू सो मच। Thank you. जेम फॉस्टर हमारे साथ मौजूद थे, डेजर्ट वाइपर के साथ मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टार से भी, और दिनेश चंदीमल हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, ऑफ कोर्स द न्यू चैलेंज, न्यू टीम, एंड ऑफ कोर्स द ब्रांड न्यू लीग, सो मस्ट बी वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर एवरीवन। Yeah, first of all, thanks for having me. Yeah, this is a really good tournament for all of us. This is the first time this international league is happening in Dubai, and I must thank to Emirates Cricket Club to organize this kind of tournament. So this is a really good opportunity for all of us as international players, and at the same time, this is a really good opportunity for UAE players and the associate players. So yeah, we as a Desert Vipers team, we're looking forward to the tournament. So tell us something about your team, the new talent, of course, the combination. And must be Dinesh, which is very exciting, if sometimes very challenging to gather again at some another league, and of course the new bunch of players, and of course as the leader of the team. So how are you looking forward? Exciting you are for this challenge, of course. Tell us something about the team you have, especially if of course the new talent, because this T20 league just keep providing us the new stars, and of course everyone watching one player performing in one league, and of course he will be catcher for the next league. Yeah, I think we started our camp 6th of January, so we got a really good bunch of players in our team, especially players like Colin Munro, Alex Hales, Vanidu Hasaranga, and Sam Billings. They got so much of experience playing in T20 format. At the same time, we got really good youngsters. So I think that overall we got a really good team with the experience and the youngs. It's a mixed up. So we are ready as a team. I feel that if we can perform well on that day, even we can go to the title win as well. So we're looking forward to the tournament. Of course, post Mahela, of course, Sangakkara, and of course, many of the great players. But in recent time, we see in Sri Lanka, why the T20 cricket, the new brand of international players from coming from the league experiences, they are now shine again, and they have a very competitive series, especially in the first part against India as well. So I think it is very pleasing to see again Sri Lanka back to their very best, like 4 or 5 years ago when Sangha and Mahila was there. So I think this T20 leagues, and of course the new players, is also helping international teams. Yeah, definitely. When you look at our team, we have done uh, well in last 6 months. So especially we won the Asia Cup in Dubai. So and at the same time, as far as I'm concerned, we are doing well in India at the moment because we all know how good is India in India. They are a tough team to beat in India, but overall we have played some outstanding cricket. uh, what we have to do is that we'll have to take the positive out of this tournament and looking forward to the 2023 ODI World Cup. I'm sure boys will do that, and Dasun Shanaga will be his outstanding throughout the tournament. So this is a really good learning process for all of our players, and I'm sure they will take the positive out of this tournament and looking forward to the 2023 ODI World Cup. Yeah, many of the Sri Lankan players coming for the PSL this time, of course, and of course, many Pakistani would love to see you in PSL as well. So, any message for the Pakistani fans, and words about the Pakistan Super League? Yeah, I mean it is outstanding. I'm also put my name into the auction, but I didn't get the opportunity to come and play there. Anyway, I'm in future if I get an opportunity to come and play in the PSL, that will be a really good opportunity for me to come and play. So it is a really good tournament, and so much of really good players coming into that tournament. And yeah, I'm looking forward to the uh, opportunity. If I get an opportunity, definitely will come and play in Pakistan. And don't worry, Sri Lanka, Pakistan also coming to Sri Lanka this July for a two-match test series, a very exciting one. Yeah, very exciting. As always, we played in the last year as well, two test matches at goal, and Pakistan. It's always helping us. Uh, Even the cricket balls also, they have really good friendships, and yeah, we're looking forward to the Pakistan series in coming year as well.
हम मौजूद हैं अब एक ऐसे क्रिकेटर के साथ नीड नो इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स टॉम मूडी एंड ऑफ कोर्स ही इज द डायरेक्टर क्रिकेट डेजर्ट वाइपर्स एंड ही with the T20 franchise all over the world. Thank you so much for your time, Tom. Obviously, the Emirates, where a lot of leagues, lot of cricket happened. Finally, they have now their own league. I think this is a great opportunity for this country to, of course, for their own talent. And how you excited about your team, Desert Vipers? Yeah, very excited, and as you say, I think it's wonderful that the UAE have got their own franchise tournament. It's attracted some world class players. We certainly at Desert Vipers are very excited about the opportunity to be involved in this league. We've been working hard behind the scenes in preparations for this first year. We've got all our UAE players locked in, and we've got our overseas players all here now, ready to go for our first match on the 15th. All right. So definitely you have a very good star-studded coaching staff, and of course the team here. So and of course other team as well. So how excited about the team, the competition, the competitiveness of this league? I think it's going to be a very competitive league. You only have to look at the quality of international players that have been attracted to this league. Is going to bode well to a very competitive and high standard of cricket. So certainly one to watch out for. And also from a UAE standpoint, it's a terrific opportunity for all that young talent. To get the exposure with all the experienced coaches that are involved in the various franchises, plus all the international players. This T20 league also become a different, community and fraternity, because we've seen a lot of youngsters emerge from the many other leagues, and of course, one player perform well in one league definitely got a chance, and of course, the coaching staff, some of them like you and other and many other, when they go to another league and of course the franchise, so they rope in some other talent. What opportunity for the youngsters when you compare to your days when the only international cricket ever happened. So now players have a lot of opportunities, and of course the financial aspect, the fame they got overnight. Yeah, look, it is a very different world, the game of cricket now, than what it was 30, 40 years ago. But, I think it's exciting for players to get that exposure. And as you quite rightly say, it only takes an emerging player to have a stunning tournament, and suddenly, the cricketing world wakes up to, a new superstar that is on the horizon. So it's a great platform for the players to showcase their skills. It's a great platform for the players to develop their skills. And from a coaching perspective, it's a great opportunity for coaches to learn in a very fast-moving environment. You're learning from other coaches, like for instance, with our coaching staff at Desert Vipers, there's a lot of learnings that are going on amongst all those different coaches from their different experiences from various parts of the world. All right. So definitely, the league like Pakistan Super League for Pakistan, they become the launching pad to the return of international cricket in Pakistan. So this is another aspect of things. I think the unique aspect of especially about the Pakistan Super League, because of one final, 4 matches, then 8, and now international. Australia recently toured Pakistan, and of course they played also very well there. So this is another aspect of this T20 league. Yeah, it is. Pakistan had, obviously that unique experience with developing their own league and the benefits of that, not only from a playing perspective, but as you quite rightly say, sort of bringing international cricket back to Pakistan, which is great for the world game. The UAE, this is just the early infant stages of their development as a cricketing nation, as an associate nation. They have got their own infrastructure to continue to develop, their playing resources to continue to develop, and hopefully a league like this is only going to help fast track that. When we are doing this interview, Tom, obviously Pakistan now after February will search for the new head coach, and many of the Pakistani fans, I think they have 3-4 names on their fingertips, and one of them is Tom Moody. So of course the opportunity is coming up if they approach, or maybe if they are recruiting someone. So what will be your response, Tom? Given my commitments that I have
with this league and this franchise and other commitments I have, it'd be very unlikely that it'd be something that I'd look at. But it'd be obviously an exciting opportunity for someone to take on, because clearly there's a lot of talent in Pakistan, and there's clearly a passion for the game. All right. Thank you so much, Tom, and have best of luck with the Desert Vipers. Thank you very much. टॉम मोडी मौजूद थे। और ILT20 एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की T20 लीग है, इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और उसके साथ कोचेस मौजूद हैं। भारत के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन, उनका इस लीग पर और फिर पाकिस्तान टीम पर स्पेशली बाबर आजम के हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। मौका तो देना चाहिए, आप जब तक आप मौका नहीं देंगे आप कैसे परख नहीं सकते कौन सा प्लेयर अच्छा है कौन सा प्लेयर अच्छा नहीं खेलता है। तो जब तक आप मौका नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ कि यूएई के जो ILT20 लीग है DPL वर्ल्ड का, तो यूएई के प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो मेरे ख्याल में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कभी खेले नहीं हुए। शायद ओके टाइम कंट्री को खेलते हैं, कंट्री के साथ और दूसरी कंट्री के साथ खेलना, बट लेकिन यहाँ पे डिफरेंट प्लेयर्स के साथ लेना, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के हैं जो एकदम बिगेस्ट प्लेयर्स है, इंटरनेशनल प्लेयर्स है। तो मेरे ख्याल कि उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वो प्रूव करें कि हम इंटरनेशनल स्टेज पे भी अच्छा खेल सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम अच्छा नहीं खेलते, बट लेकिन और अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा खेलते हैं, उनका गेम अलग है, तो अभी वो स्लॉगिंग का उनका टाइप का गेम नहीं है। अगर मेरे ख्याल में अगर वो स्लॉगिंग करने जाएंगे तो शायद मेरे ख्याल में वो उनका नेचुरली जो उनको टैलेंट है उसके अगेंस्ट जाएंगे। जो मैं समझता हूँ जब भी जो आपको नेचुरल टैलेंट होता है उसके ऊपर ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई दूसरी नई चीज़ करेंगे वो आप उसमें माहिर होते नहीं हैं, बट ट्राई करते हैं, बट वहाँ पे फेल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। बट लेकिन जैसा भी उनका गेम है वो मेरे ख्याल में अच्छा ही। उनका ओपनिंग जो प्लेयर्स हैं उनके दो ही प्लेयर्स हैं, रिजवान और बाबर, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स उनके लिए। तो अगर आप देखेंगे पीछे के टूर्नामेंट में बाबाराजम ने काफ़ी टाइम LBW काफ़ी टाइम जल्दी आउट हुए, तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप कभी ऊपर खेल रहे हैं अगर रन नहीं बन रहे, तो शायद मेरे ख्याल में नीचे जाने से या नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4 खेलने से काफ़ी फ़ायदेमंद होता। वहाँ पे आपको बिल्कुल सोचना पड़ेगा, वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी अलग करनी पड़ेगी। जो है बट जहाँ पे थोड़ा सा रन बनते हैं तो आपको वहाँ पे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि नेचुरली वो ओपनिंग बैट्समैन है, तो थोड़ा सा मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल में कितना 1 साल या 1.5 साल ही हुआ तो कैप्टनसी लेके, तो थोड़ा मौका देना चाहिए। जब तक आप मौका नहीं देंगे तो आप इतना जल्दी प्लेयर को कैप्टन को जज करना एक आसान काम। काफ़ी अच्छे बॉलर है, बट लेकिन थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इंजरीज हो जाती है, तो फिर इतना अच्छे से अच्छे बॉलर फिर इंजरीज़ के बाद में आके खेलना बहुत मुश्किल होता है। बट लेकिन अच्छा बॉलिंग अटैक अच्छा है, यंग बॉलर है, तो इंजरीज के ऊपर ध्यान दें। अजहरुद्दीन ने क्या कहा ये तो आपने देखा। इसी तरह जो जिम्बाब्वे के साबिक कप्तान है, इंग्लैंड के साबिक कोच मुल्तान सुल्तान में आप उनको जानते हैं जब वो कोचिंग करते हैं, एंडी फ्लावर, उनका पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लीग के हवाले से क्या कहना है, आइए वो भी देख लीजिए। At the moment, I'm enjoying my franchise experiences, and I'm quite busy at the moment, so I'm going to stick doing that. Pakistani players, I have great respect for, of course, and there are some outstanding Pakistan players. Some of them are playing in the Big Bash. It would be great to see them in this league. I think it depends on what personnel is available. If someone is good enough for all 3 formats, and he's got enough energy to do it, and the fixture list allows it, then the selectors can make that decision. I think it very much depends on the particular situation in that country at the time. भारत के कमेंटेटर्स मौजूद हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं। यूसुफ पठान, जिन्होंने भारत के लिए लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट खेली और बड़े जानाना बल्लेबाज थे, उनका इस लीग और फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स क्योंकि इस लीग में नहीं है। जब उनसे सवाल किया गया कि इस लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को होना चाहिए, उनका क्या जवाब था, आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया में जो पूरी दुनिया में क्रिकेट हो रहा है और फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो रहा है, प्लस दुबई में भी यहाँ पे हो रहा है, यहाँ के जो बोर्ड है उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है, और यहाँ के जो यंगस्टर्स है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। और जहाँ जहाँ क्रिकेट हो रहा है, जहाँ पे भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो रहा है या अच्छे लेवल का क्रिकेट हो रहा है, तो वहाँ पे यंगस्टर्स के लिए काफ़ी एक अच्छा मौका बनता है कि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करे, और उनका जो एक्सपीरियंस क्रिकेट खेलने का है और किस तरह से वो अप्रोच करते, किस तरह से अपने आप को तैयार करते गेम के लिए, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए सीखने के लिए बहुत अच्छी बात है। और एसोसिएट नेशंस के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वो उनके प्लेयर पूरी दुनिया के जो प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते, तो उनको भी बहुत कुछ सीखने के लिए और टीम के लिए भी बहुत अच्छी बात है। एसोसिएट नेशन की जो टीम होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट जो खेलते हैं, उस टीम के लिए भी बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं यहाँ पे। डिपेंड करता है दोनों कंट्री जिस तरह से क्या डिसाइड करती है, और हम बिल्कुल जो डिसीजन
कंट्री के लोग लेते, जो बड़े लोग लेते, हम बिल्कुल उसके साथ है कि वो जो कहते हैं उसी तरह से होना चाहिए। पाकिस्तान जो क्रिकेट खेला है, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर्स रहे हैं और वो बहुत बड़ा गैप है। इंडिया के पास वो चीज़ आपको देखने को कम मिलेगी, क्योंकि हमें हर हर टीम में, डोमेस्टिक जो टीम होता है उसमें एक एक दो प्लेयर ऐसे हैं कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, और इंडियन टीम को जब भी वो प्लेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं तो जो गैप है बहुत नैरो रहता है हमारा, क्योंकि प्लेयर्स जो है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल आपके पास वो कमी है, आपको ढूंढने पड़ते प्लेयर्स के कहाँ से लाए, और बहुत अच्छी बात है कि आपको दो तीन प्लेयर जो मिले काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल रहे, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छी बात है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे, अच्छा अच्छा स्टार्ट भी दे रहे। बाबर भाई जैसे आप बैट्समैन बैट्समैन भी अच्छा कर रहे, बॉलर्स भी अच्छा कर रहे, तो ये एक अच्छा साइन है टीम के लिए। तो आपने देखा कि ILT20 में जितने भी जो प्लेयर्स हैं, इसी तरह जो मैनेजमेंट है, कोचेज हैं, उनसे हमने बात की। उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और कल प्रोग्राम देखने में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।